नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा और आप देख रहे हैं वीकली राउंडअप। वीकली राउंडअप में मैं हर हफ्ते आपके लिए कुछ ऐसी खबरें, इवेंट्स, प्रोग्राम्स लेकर आती हूं जो यूके डायस्पोरा से रिलेटेड होती हैं। तो बिना देरी करे शुरू करते हैं। इस हफ्ते मैं आपको बताना चाहूँगी कि लंदन के नेहरू सेंटर में एक बहुत ही पॉपुलर बुक मोदी लॉग बुक का लॉन्च हुआ है, जिसके राइटर हैं डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस। एंड इस बुक के लॉन्च के लिए इंडियन हाई कमीशन ऑफ इंडिया ने ये प्रोग्राम रखा और जिसके अंदर पॉलिटिकल इंडियन लीडर स्मृति ईरानी जी भी प्रस्तुत हुए। सपनों का भारत, नई उड़ान का भारत, साहित्य और संस्कृति का अनमोल खजाना है भारत। A dreaming India, an India ready to soar, a treasure trove of literature and culture is India. Namaskar, our distinguished guests, Srimati Smriti Zubin Irani, the former Union Cabinet Minister. We have Deputy High Commissioner of India to the UK, Mr. Sujit Ghosh, and Lord Raj Lumba, along with various dignitaries here today. I am proud and privileged to speak to you for the launch of Modialogue here in the United Kingdom. Modialogue is a book which encapsulates the spirit of change under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. This book is not just a compilation of the Man Ki Baat series of Prime Minister. It is the aspirations of 1 billion Indians and their dreams shared to the lenses of Man Ki Baat. The heart of this book lies in the radio program, a groundbreaking initiative by Prime Minister which has never been initiated by any global leader in the past, which has turned a simple broadcast into a nation-wide dialogue. It is a series which touches India's soul, reaching every corner of the country from cities to remote villages. Through Man Ki Baat, PM has brought in front the unsung heroes, farmers, students, scientists and laborers, making their struggles and accomplishments into a collective celebration of progress. Modialogue has portrayed the stories with great insights, making it in a way which resonates with readers across ages and helps them identify with each other. The book reminds us that leadership is not just about policies, but is about people, their dreams, aspirations, and potential. I'm delighted to welcome all of you to the Nehru Center. This evening's event themed Modialogue, a conversation on Viksit Bharat, is an important one as it focuses on how governments can effectively utilize communication to bring about positive transformation. Man Ki Baat is hugely popular amongst the Indian community here in London, ma'am. I remember how the community turned up enthusiastically early in the morning to listen to the 100th episode of the Man Ki Baat last year at the High Commission in April. Shekhawat Saab was there that morning. I think we did it around 7 in the morning, if my memory serves me right. Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, has through Man Ki Baat directly and effectively communicated his vision on Viksit Bharat, or India as a developed nation 2047, to all of us Indians. Through this, he has inspired Indians to attain greater heights and given them reasons to believe in themselves by showcasing inspiring stories from all over India and outside, small and big stories from rural and urban environments which are firmly anchored in our cultural and civilizational milieu. For the West, the values of diversity, equity, inclusivity, sustainable development has become important values only recently. If you look at the Indian civilization, these values have been our DNA for thousands of years. And that is what has been brought out so effectively by Honorable Prime Minister during his interactions as part of Man Ki Baat. Today, ladies and gentlemen, we come to a close of a 4-nation tour for a book that in itself is a bit distinct with regards to the engagement I have ever undertaken in my 2 decades of politics. But why give time and go cross country and across continents for a book?
I think one of the reasons sits on this very dais today. Lord Lumba has had a long association with his roots, and one of the reasons why he aspires to serve issues of widows and predominantly women in need is because of what transpired within the four walls of his own home. Inspired by what challenges confronted his own mother, he as a son thought that the best way to give back to the community was to be the change that you wish to see in the world, as Gandhi famously said. Now, given that I am to engage in a dialogue with Ashwin, the author, let me say this room today is filled with those who believe that Bharat will be Viksit by 2047. And to those who believe us, to those who support us in this journey, who do we speak of today? There are many who come here presuming that we celebrate the head of our government. But those who have been a witness to his journey and have partaken in some of it know that what we come together to celebrate under one roof is the fact that a democratic dialogue in one of the oldest civilizations in the world, we as a nation delivered on the promise and premise of democracy. What is Modi? Not just the head of a government. What is Modi? Not just a political leader. What Modi possibly stands for is potential that every Indian has. To take a few words out of one of Ashwin's speeches, that India forever was known as the land of potential. What Narendra Modi did was to inspire that confidence for us to undertake the journey from being the land of potential to the land of achievements. आइए देखते हैं ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट, जिसमें चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश मिस्टर मोहन यादव जी प्रस्तुत हुए और उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर्स को बताया कि कैसे वो मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टेट अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताया। आइए देखते हैं। तो इंदौर वैसे भी इंदौर स्वच्छता में आगे, व्यापार में आगे है ना राजेश भैया। इंदौर किस बात में आगे? तो मैं ऐसे ही पत्रकार से इंटरव्यू दिया, उसने कहा भैया देखो इंदौर स्वच्छता में आगे, व्यापार व्यवसाय में आगे, आबादी में आगे, दूसरे सारे काम धंधों में आगे, कला में, संगीत में, साहित्य में, सब में आगे। और बोले हम संयोग से क्या 203 विधानसभा 230 विधानसभा में सीएम भी नंबर 1 की सीट पे बैठता था, और आपने बोला अपने पास रख लिया तो आप भी इसमें आ गए। तो आप इंदौर को आपने सबदूर इन्वेस्टर सबमिट कर दी, तो आप इंदौर में क्यों नहीं कर रहे? तो मैंने कहा इंदौर में नहीं कर रहा मतलब? बोले इंदौर सब में आ गए। तो मैंने कहा मेरे को मालूम है, इसलिए तो सबको इंदौर बनाना, हमको क्या तकलीफ? पूरे मध्य प्रदेश को इंदौर बनाना कि नहीं बना? इंदौर भी मध्य प्रदेश में तो है, तो इंदौर के साथ बाकी चीजों में भी सब क्षेत्रों में चले। इसलिए हमने सभी संभाग केंद्रों पर अपने में से ग्वालियर वाले कौन कौन है हाथ खड़े करना। अब आप बताओ ग्वालियर के अंदर कोई इन्वेस्टर सबमिट करता था पहले? मैंने तो ग्वालियर में भी भाषण दिया, ग्वालियर वाले तो बागी बंदूक धाए और वहां की मजे भी ऐसे थे कि पंडित जी का किसी से कोई बागी से झगड़ा हो गया, तो बागी आएगा, डकैत आएगा लड़ाई करने, झगड़ा करने, तो संस्कार ऐसे कि पंडित जी पाए लागू और बंदूक उठाए तब मस्जिद बोले, पहले प्रणाम करेगा फिर गोली मारेगा। लेकिन आज बदलते दौर में ग्वालियर भी बहुत बदल गया। ग्वालियर में एयरपोर्ट बहुत बढ़िया बन गया, ग्वालियर में जबरदस्त इन्वेस्टमेंट आया। ग्वालियर के सागर वाले कौन कौन है बताओ? अब सागर में कोई इन्वेस्टमेंट सबमिट बताओ, कितना जबरदस्त रिस्पॉन्स। रीवा, जबलपुर, सागर सब संभाग केंद्र। अभी नर्मदापुरम, होशंगाबाद, इंदौर का बिल्कुल, उज्जैन का बिल्कुल गिनती में ही नहीं आएगा, छोटा सा। लेकिन हमने जो शुरुआत में कितनी जमीन रखी थी राघवेंद्र जी? 200-250 हेक्टर रखी थी, 225 करी थी। हमको लगे ये बहुत हो जाएगी, तो उसके पिछली कैबिनेट में जब रखी तो डिमांड ऐसी है तो फिर डबल कर दी, 500 कर दी। और अभी 7 तारीख को हमारी अभी तक इन्वेस्टर सबमिट होने वाली नहीं, वापस 500 हेक्टर फिर रखना पड़ी। जहाँ हमारी अभी मीटिंग ही नहीं हो रही, उसके पहले 1000 हेक्टर की जमीन की डिमांड आ गई। ये जो बदलते दौर का ये कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। और कोई भी आ रहा है, किसी भी सेक्टर का आ रहा है, अपने यहाँ बताओ आप ये बदलते दौर में मैं कुछ बातें बताऊंगा। जैसे उदाहरण के लिए
मेडिकल डिवाइस पार्क। अब हमारा मेडिकल डिवाइस पार्क यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद, 4 मेडिकल डिवाइस पार्क बने, उसमें से उज्जैन विक्रम उद्योगपुरी का मेडिकल डिवाइस पार्क सबसे बड़ा था, लेकिन 900 हेक्टेयर का भी वो भी खत्म हो गया, फिर 900 का नया बनाना पड़ रहा है। ये अपना बदलते दौर का है उज्जैन, बदलते दौर का प्रदेश है। और केवल वहाँ नहीं, मेडिकल कॉलेज 2003 तक कुल 5 थे हमारे पास, 5 मेडिकल कॉलेज 55 साल में, 1956 में मध्य प्रदेश बना, 2003-4 तक केवल 5 मेडिकल कॉलेज। 20 साल में अभी अपने पास 17, मतलब 3 तो मैंने अभी अपने समय चालू कर दी सरकारी, और 12 नए बने, 8 पाइपलाइन में, 13 प्राइवेट है, तो 30 मेडिकल कॉलेज हो गई। लेकिन ये 20 साल में, अभी हमने 14 के टेंडर 1 साल में लगा रहा है, ये अपने 50 मेडिकल कॉलेज होंगे 1 ही साल के अंदर। ये अपना बदलता हुआ उन शहीदों की याद में जो मुंबई अटैक 26/11 में शहीद हुए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए द हाई कमीशन ऑफ इंडिया ने मेमोरियल सेरेमनी लंदन में आयोजित करी। उन शहीदों की याद में जो मुंबई के टेरर अटैक ताज होटल 26/11 में शहीद हुए, उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए द हाई कमीशन ऑफ इंडिया ने लंदन में एक बहुत ही प्यारी सी मेमोरियल सेरेमनी आयोजित करी। इस सेरेमनी में श्रद्धांजलि देने के लिए हिज एक्सेलेंसी विक्रम डोवेस्वामी, द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया, बीजेपी पॉलिटिकल लीडर स्मृति ईरानी जी और चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश श्री मोहन यादव जी भी शामिल हुए। The minds of millions of people around the world who saw live for 60 hours the tragedy and the brutality of that incident. It is hard for us to remember again the spirit that drove the people who did this. The idea that you would literally go from place to place, hunting down people commuting at the end of a busy day, attacking tourists, backpackers, travelers in a popular cafe, attacking people in a hotel, people gathered for marriages, for celebrations, pulling people out on the basis of their passports, shooting them if they had the misfortune, as it was at the time, to have said the wrong thing or be of the wrong nationality. Killing people regardless of who they were and how they happened to be there, but merely to prove a point and to create a sense of terror. It is hard for us to fathom what drives people to do that. It is, however, possible for us to remember some things. The commitment of ordinary policemen, people like Tukaram Omble, a former Indian Army soldier, after his service commission enrolled into the Mumbai police, who was unarmed and who took on two of the terrorists, dying in the process, but helping us capture one of them, Ajmal Kasab, who, because he was taken alive, helped us unravel the conspiracy around it. Otherwise, the intention was that he would not have survived. Tukaram Omble, an ordinary policeman, showed unimaginable courage in discharging his duty. I also think of the other policemen, including my college mate and friend and senior police officers, paramilitary officers, who did a remarkable job and saved the city from carnage which was inflicted by terrorists. Unfortunately, terrorists will always have the initiative. They will always have the planning, and they can always have the element of surprise. And that's exactly what they did on that day. It was one of the most horrific scenes which we witnessed on television. We also had our very dear friend, late Lord Ghulam Noon, in the hotel. The way he described what was going on was unbelievable,
so horrific that it is beyond imagination that people could come so prepared just to indiscriminately kill people, children, women, unarmed people, guests going about their life. I remember the day I was in the as the chair of the all-party parliamentary group on India. All political parties, government and the opposition, they all came and condemned what happened. The whole Indian diaspora and the friends of India gathered outside to condemn, but also give them the moral support to all of us. I said last year, Your Excellency, that as a son of India, now as a supporter of India, we all, the diaspora here, stand by India at the difficult times and the good times. And we will not accept that kind of attack on our soil in India. As somebody who had a child and a family caught in the crossfire, as Mr. Duraiswamy said, we have individual memories of what that terror brought to us. But as Indians, we resolutely said, never again. Never again shall we be challenged on our soil or overseas. Our mettle be tested. For those who wanted our country to bend a knee in front of terror, know that irrespective of the terror inflicted upon us, men like Tukaram Omle stepped up and due process of law followed. Know that though the city resonated with the sound of gunshots and grenades thrown, that city, in its silence, paid homage to those who laid their lives so that we could thrive, we could live to see another day. But at the same time, as our High Commissioner said, a city that moved on, never leaving its past behind, but remembering that those who wanted to inflict terror upon us wanted us to change the way we lived, the way we collaborated, the way we thrived. 26/11 for some is just a day in the history of India. 26/11 for many is a day where our patience was tested, where tears flowed aplenty, but with resilience we fought back. Even to this day, there will be many who will tell you that in a new India, a new Bharat, we remember the men and women who laid down their lives so that when we build with compassion, we build better with strength, but we build together with those who believe in peace. So today, those who come to pay homage, our gratitude as Indians, for you stand with us shoulder to shoulder, not only in times of grief, not only in times of peace, but also when we will be tested. It really does say something when so many members of our community come together in a commemoration for a period of reflection for what happened on the 26th of November 2008. We've already heard and we've seen from the footage today, every single one, not just in this room, but across India, and in fact our amazing diaspora community across the world, all have a personal memory of what happened, not just on the 26th of November, but in the days that preceded, followed, and the events that then came forward. I actually want to pay tribute to so many people that stood for the real values of the spirit of India, but for the way in which public
service was shown at its best, the sacrifices and the commitments that were made by so many to save lives, but also to serve the country when it came to defeating terrorism. And of course, terrorism knows no boundaries whatsoever, and as a former Home Secretary, I have experience of this. And as your former Home Secretary, I've had the greatest privilege to work with the Indian government in recent years, to serve alongside my friends and colleagues in the Indian government, to stand strong against terrorism, to be there to ensure that we move forward, not just on intelligence and security information, but that our values prevail. And that our values in particular will ensure that events as to what happened on the 26th of November are never repeated. They are prevented, in fact. And that atrocities around the world, when they do take place, we stand together. हमारे देश के अंदर की आज़ादी के बाद की बहुत बड़ी अगर कुछ चुनौतियों में से थी तो वो एक घटना थी जब हमारे देश के दुश्मन अपने मंसूबों पे यहाँ गोलियां चलवा रहे हैं, लोगों को मरवा रहे हैं और पाकिस्तान सरेआम उस बात को बढ़ावा देता दिखाई जा रहा है। टेक्नोलॉजी का एक तरह से वो दुरुपयोग करने वाला भी मौका मान सकते हैं कि कहीं और से डायरेक्शन दे रहे हैं। लाइव प्रसारण का इस प्रकार का उपयोग ये बहुत दुखद रहा है। मुझे इस बात का संतोष है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बदलते दौर में हमारे सभी तीनों सेनाएं, सभी रक्षा संस्थान, सभी क्षेत्रों में काम करते हुए दुनिया के अंदर वो अतीत की 26/11 की घटना को छोड़े तो हम जब बात के क्रम में देखते हैं जब एयर स्ट्राइक होगी, सर्जिकल स्ट्राइक होगी तो वो दोनों तुलना करने के लिए आज अवसर नहीं है, लेकिन अपने आप दिमाग में आ जाता है कि हमारे देश के अपने सुरक्षा बल हो, आम नागरिक हो, किसी की भी जान का जो महत्व है आज बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत ने अपनी क्षमता बनाई है, मैं आज लंदन में यूके में इस घटना को स्मरण करते इसमें जिनने भी अपने प्राण गंवाए, लेकिन हमारे लिए वो अतीत का एक सबक तो है ही। परमात्मा करे ऐसा कभी कोई मौका नहीं आए। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तो परमात्मा दयालु है। और एक हंसी की बात हमें अपने आप याद आई कि तुम भारत छोड़कर यहाँ चले आए, पर तुम्हारा पीछा हमने नहीं छोड़ा। ठीक है, तो अभिप्राय साधु ऐसे ही हैं जैसे वो जयंत के पीछे बाण लग गया था, वो भागा भागा फिरे बाण उनके पीछे। तो साधु जिसके पीछे लग जाते हैं जब तक पहुंचा न दें पीछा नहीं छोड़ते। तो कैसे जाएंगे? सरल उपाय। यूं तो ज्ञान को भी लोग मार्ग कहते हैं, लेकिन हम क्या कहते हैं? मार्ग होता है अपने जगह से दूर जाने के लिए। अब भगवान के यहाँ जाना नहीं है। त्यागे नहीं के आत्म तत्वमान छोड़ दो सब, पहुंच गए। इसलिए ज्ञान मार्ग नहीं है। और ये लाइन हम बोलते रहते हैं, दरअसल में वही थी मंजिल। कदम उठा था जहां से पहले, जहां से आप चले थे, मंजिल तो वही थी, जाना नहीं है। और कभी कभी ये भी कहते हैं
कि आप अपने घर से कार से कहीं गए होगे, फिर लौटे होगे, तो कार आपको दूर हो गए हो तो थोड़ी दूर लौटने को चाहिए, कार चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, ट्रेन, फ्लाइट, जो भी। पर आप ये घर में, आपके बेडरूम में कोई और नहीं जाता, तुम ही जाओगे। तो इसी तरह से हमें सब कुछ छोड़ना है, आंखें छोड़ दो, इसलिए आवृत्ति चक्षु। आज के वीकली राउंडअप में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ नए इवेंट्स और प्रोग्राम्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए MA TV, योर चैनल ऑफ चॉइस।